Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we will learn about third classification of carbohydrates. The name of the third classification of carbohydrate is polysaccharide. In the polysaccharide, you will see the minimum number of carbohydrates are 20 and they extend up to 1000 of units. Some common examples of polysaccharides are cellulose, glycogen and starch. ग्लाइकोजन में बेटा आप देखेंगे कि डी ग्लूकोज के यूनिट्स आपस में लिंक हुए हैं अल्फा 1 to 4 पोजीशन पे। अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करें इस यूनिट को एक यूनिट डी ग्लूकोज का, तो यहाँ से बेटा नंबरिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4 5 एंड 6। ये एक यूनिट हो गया और ये दूसरा यूनिट हो गया, और इसकी अगर नंबरिंग स्टार्ट करें तो आप देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। पहला यूनिट और दूसरा यूनिट आपस में 1 to 4 पोजीशन पे। अब यहाँ पर लिखा हुआ है अल्फा, तो बेटा मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर कार्बन नंबर 1 पे जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप और ये OH ग्रुप, इफ बोथ आर इन ऑपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस ग्लूकोज यूनिट के साथ हम अल्फा इस्तेमाल करते हैं। दिस वन इज आल्सो, यू सी द थर्ड वन, दिस वन इज आल्सो 1 to 4 linkage, and here you can also see the linkage is in between 1 to 4. Here you will see the branching also exists, and the branching is, here you can see this one is also D-glucose, alpha D-glucose, alpha D-glucose। इस यूनिट में आपको नंबरिंग यहाँ पर नजर आएगी नंबर 6 और यहाँ पर नंबरिंग 1। तो ये चीज़ यहाँ पर शो की गई है कि ब्रांचिंग जो है वो 1 to 6 पर एग्जिस्ट करती है। नाउ वी विल मूव टू द starch. Here you will see starch contains two types of glucose polymer. The name of the first one is amylose and the second one is amylopectin. तो बेटा इन दोनों का आपस में जो डिफरेंस है उसके स्ट्रक्चर से वाज़े है। अगर आप इसमें यहाँ पर देखें, this one is your D-glucose, alpha D-glucose. This one is alpha D-glucose, alpha D-glucose, alpha D-glucose. They are linked at 1 to 4 position. Here in amylose you will see the linkage is at position 1 to 4। अगर बेटा आप यहाँ पर देखें तो ये यूनिट एक यूनिट हो गया, ये दूसरा यूनिट हो गया, ये तीसरा यूनिट हो गया, ये चौथा यूनिट हो गया एंड सो ऑन। यहाँ पर जो लिंकेज है, यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर अगर स्टार्ट करें 1 2 3 4। What is the main difference between amylose and the glycogen is, here you will see the branching exist, but if we see the amylose molecule, here you will not see any type of branching. The second one is amylopectin. What is the main difference between these two? Here you will see the first one is stretching and here branches exist.
Here you can also see the branching points occurring every 20 to 30 residues, and they are at alpha 1 to 6 linkages. The next one is cellulose. In cellulose, glucose residues have beta configuration. I have explained to you in previous lecture, if this OH group and this OH group, if they are in the same direction, then you named it as beta D glucose. The glucose residues in the cellulose, they are linked by beta 1 to 4 glucoside bonding. So this is the cellulose. Now all these things are explained in a video. Please see this video. After watching this video, if we summarize our today's lecture, you can see the difference between starch, glycogen and cellulose. Here you can see in starch, in amylose, they are generally two types, amylose and amylopectin. Amylose, you will see the lean structure, and here you will see the branched one, and here the branching occurs at 24 to 30 residues. And the second is glycogen. Here you can see the linkage is between glucose units is at 1 to 4 position, and the branching occurs at 1 to 6. But here the branches every 8 to 20 residues. This is the main difference between here. And if you see the cellulose, here the linkage is beta linkage. This is all about our today's lecture. If you have any question, please let me know. Jazakallah khair.